हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 सेमेस्टर के मिड टर्म पेपर्स जो कि अप्रैल 2023 के है, लेटेस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ यूजीएस और जीएस दोनों स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून दोनों में डिस्कस करूंगा। बिगिन विथ इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें से पहला है central to Bakhtin's critical theory is the concept of dialogy. Elaborate with reference to his idea of dialogized heteroglossia shared in his essay Discourses in the novel. दूसरा है For Norman Holland, all interpretations are subjective. Discuss with reference to his idea of individualized identity theme in reader-oriented criticism. तीसरा है The new critics borrow Eliot's belief that the reader of the poetry must be instructed in a literary technique. Explain with the reference to Eliot's term objective correlative. ये तमाम टॉपिक्स लिटरेरी थ्योरी के मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं तमाम थ्योरीज को। क्वेश्चन नंबर 2 है लाइक अदर अप्रोचेस टू टेक्सचुअल एनालिसिस, स्ट्रक्चरलिज्म फॉलोज neither one methodological strategies nor one set of ideological assumptions. Discuss two methodologies of structuralism proposed by Claudel Lévi-Strauss and Vladimir Prop. अगला पेपर है semantics and pragmatics. Question number 1, the quest for determining the nature of meaning has led philosophers and semanticists to propose various approaches to the study of meaning. Discuss in detail थ्री मेजर अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ मीनिंग। थ्योरीज भी मैंने डिस्कस किए हुए, टाइप्स ऑफ मीनिंग भी डिस्कस किए हुए, बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस किए हुए। क्वेश्चन नंबर 2, सेमेंटिक्स डील्स विद द कन्वेंशनल मीनिंग कन्वेड द यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ अ लैंग्वेज, जॉर्ज यूल कहते हैं। सो आपने डिस्कस करना है आल्सो डिस्कस इन डिटेल सेंटेंशियल सेमेंटिक्स। American literature. Question number 1, how did Frost use the natural environment as a metaphor for human experiences and emotions? And what effect did this have on his audience's understanding of the human condition? Question number 2 है how did Poe's use of unreliable narrators and shifting perspectives contribute to his unique style of storytelling? In what effect did this have on their readers? Postmodern fiction. Question number 1, how does Marquis use the technique of cyclical time in 100 Years of Solitude to create a sense of inevitability and repetition in the destructive behaviors of beyond our family across generations? How does the repetition of the names and blending of the identities contribute to this sense of continuity between the past and present? Or question number 2 है how does Borges the Aleph explore the nature of infinity and challenge the notion of reality as an objective stable concept? How does the concept of Aleph as a point in space that contain all other points relate to these themes? इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन स्टडीज़. क्वेश्चन नंबर 1, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जिसमें से पहला है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिस्टेंस, फॉर्मल इक्विवेलेंस एंड ग्लॉस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटोरियल एक्शन मॉडल जो कि ट्रांसलेशन एक्शन मॉडल भी कहा जाता है सिंपली इसको। और क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस इन डिटेल Katharina's functional theory of translation that includes function-based text types, description of the hybrid genres and specific methods of translation according to text type. ट्रांसलेशन के भी तमाम टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हुए, आप वो देख सकते हैं। स्टाइलिस्टिक्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टाइलिस्टिक्स स्टडी द distinctive way of writing of individual writer. डिस्कस करना है और also make a detailed mention of at least 2 branches of stylistics with examples. Write short notes on the following, जिसमें text, style और scope of stylistics है। stylistics भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अभी आफ्टरनून के पेपर्स देखते हैं। अमेरिकन लिटरेचर. क्वेश्चन नंबर 1, critically analyze the following lines विथ अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस। आरटीसी के लिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं 2, आप वो कर ले। पार्ट बी है हाउ डिड द एनलाइटनमेंट थिंकर्स, जैसा कि जॉन लॉक हो गया, आइडियाज इन्फ्लुएंस करता है राइटिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और दूसरा है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, एवरीथिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्रिएशन, कैरेक्टर्स पोर्ट्रेयल इन द यूज ऑफ सिंबल शेयर वन सिंगल purpose of creating gothic horror, which declares
post creditability, a giant in Gothic literature. Discuss this story taking account of above statement. So Gothism मैंने discuss किया हुआ है fall of house of Usher में. Literary theory. Question number 1. According to Rosenblatt, the reading process involves both reader and text, and the reader and text participate in or share a transactional experience. Discuss with reference to phenomenology method of reader oriented criticism. क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रीफली एक्सप्लेन करना है हेनरी जेम्स थ्योरी ऑफ नॉवल, बाइनरी ऑपोजिशन इन स्ट्रक्चरलिज्म और इफेक्टिव फैलेसी. पोस्ट मॉडर्न फिक्शन. क्वेश्चन नंबर 1. डिफाइन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न राइटिंग. पोस्ट मॉडर्न राइटिंग के जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपने डिफाइन करने हैं विद एग्जांपल्स, जिसमें ब्लैक ह्यूमर एंड प्लेफुलनेस है, इंटरटेक्सुअलिटी है, मेटाफिक्शन और हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन. और पार्ट बी है in the story, the Aleph Borges blurs the lines between reality and imagination, memory and forgetfulness, and language and representation. How does this postmodern blurring of the boundaries challenge the traditional notion of truth, identity, and meaning? Or question 2 है how successfully Gabriel Garcia Marquez has incorporated the elements of postmodernism and magical realism in 100 years of solitude. ये टॉपिक्स मैंने तमाम डिस्कस किए हुए, आप वीडियोस देख सकते हैं, फ्रूटफुल होंगे आपके लिए. स्टाइलिस्टिक्स. क्वेश्चन नंबर 1. एक्सपाउंड स्टाइल एज डेविएशन. सब्सटेंशिएट योर रेस्पॉन्स विद ओरिजिनल एग्जांपल्स, particularly those from literary text. Question number 2. Write short note on any one of the following topics supporting your responses with original examples. जिसमें पहला है semantic level of stylistic analysis, historical evolution of stylistics in relation to वन डिसिप्लिन या सब्जेक्ट, जिसमें क्लासिकल पोइटिक्स या रिटोरिक्स के इनमें से एक करना है. स्टाइलिस्टिक्स भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियोस, बहुत ही इजी वे में समझाया है. ट्रांसलेशन स्टडीज. क्वेश्चन 1. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल थियरीज ऑफ ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल हेंस जे वर्मियर स्कोपस थियरी. Question number 2. Write short note on the following Nira's concept of formal and dynamic equivalence. और part B है explain Vinay and Darbalnet's model in terms of strategies and procedures. Semantics and pragmatics. Question number 1 part A. Read the following statements carefully and answer any 5 along with stable examples. जिसमें से पहला है distinguish a connotative meaning from a denotative. दूसरा है make a flowchart by highlighting the hyponium, co-hyponyms. Pragmatics is the study of speaker's meaning while semantics is not. Again differentiate करना है semantics and pragmatics का, मैंने किया हुआ है वीडियोस के अंदर. Cataphoric reference move forward while anaphoric moves backward to look at the sources. Why these references are used in discourse. Explain both with stable examples. Give an example of lexical ambiguity in English. और लास्ट है entailment and presupposition are the two features of semantics. आपने डिफ्रेंशिएट करना है इनके बीच. मैंने वीडियोस में तमाम डिस्कस किया हुआ है, उसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आप देख सकते हैं. क्वेश्चन का पार्ट बी है एनालाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लव इन इंग्लिश, ड्राइंग ऑन डिफरेंट थियरीज ऑफ लेक्सिकल सेमेंटिक्स, यानी उस थ्योरी से थ्योरी से अप्लाई करने हैं इस वर्ड पे, कौन सा थ्योरी फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड हाउ डज दीज थ्योरीज डिफर इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. क्वेश्चन 2 है पार्ट ए है डिस्कस द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन प्रैग्मेटिक्स, एनालाइज एंड प्रोवाइड स्टेबल एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर. पार्ट बी है इवैल्यूएट द क्लेम दैट देयर इज अ fundamental difference between the meaning of the words and meaning of the sentences. Again sentential semantics से related है, do you agree or not, justify. So this is all for this video. Thank you for watching. Good luck for your papers.